space as an actor time and again? I don't crack it, the director does. You know, He's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son. He will crack any character because of his aura. His personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. but it's fun to play these characters, and I'm so happy that I mean, I work with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and he's I can't say a taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and I hope he keeps doing it. And Ranbir, one question for you. Firstly, welcome. It's so good to see you after 4 years on the screen. I was watching one of your interviews where you said even if you play a superhero, you will be an underdog. Over here also, you start as an underdog and then go into the larger than life space. Could you tell us about that transformation to get into this space by starting as an underdog? Well, it was very hard for me. Karan is someone who really held my hand through it. I think one thing which I really lack as an actor is angst. I'm not an angry person. I'm a very fun-loving, happy, detached guy. So I think Karan really struggled with angst. We sat a lot together. He's saying, "मैं तेरे लिए तेरे अंदर से गुस्सा कैसे निकालो?" He started like roughing me up. He started like going deeper into my personal life, about my past, because he really wanted to really, tap into that side of me. But like I said, it's all in the paper. It's all where when you start interacting with the director, you guys created, excuse me, excuse me, excuse me. You guys created together. No, it was a cough. But thank you. I'll take the blessings. Excuse me. So yeah, so it's partnership. I've always partnered with the director, and I got a great partner, great creative partner in Karan. It was a very hard role. Trust me, there were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. Apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part, about this high octane. The emotions were up there. It's nothing which is real. It's really out there. Expressing yourself. And there were many days, and I'm like talking to God. I was like, please look at me. I'm working very hard, and somewhere in life, please, give it back, give something back. If I went through those days, but I'm glad I did, because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. क्या बात No, ma'am, it's a mix of both. Sometimes you're offered, but you don't like the script. Sometimes people don't see you in a part like this. I don't think anybody would, like 8 years back, offer me a Rowdy Rathod or a Dabang, because I wouldn't fit in those parts. I was one of those younger actors. So because of that, but when you have the opportunity, and that it's also tricky. Let me tell you, being a part of a good, well-made film is way easier than being part of a good commercial masala entertainer, because it has everything. It's a multi-genre film. It has action, comedy, romance, violence, family emotion. It's got everything. And to make that amalgamation of emotions work is very hard. या एक मिनट एक मिनट Paji, एक second, she's asking a question. सॉरी जी 100% मुझे लगता है कि हीरोइज्म वापस आ गया है. वो कभी गया ही नहीं था, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री भूल चुकी थी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करण ऐसे सोच में हमेशा रहता है. ही मेक्स लार्जर देन लाइफ मूवीज, लार्जर देन लाइफ हीरो, द हीरोइन, द विलन. ही मेक्स अ फुल एंटरटेनर. एंड ये हीरोइज्म कभी जाएगा नहीं. एंड मुझे खुशी हुई है कि ही इज डन इट, एंड अभी ये मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा अभी. दारा जी करण हाँ जी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. फिल्म में 6 गाने हैं. आजकल नॉर्मली होते नहीं, लेकिन हमारी फिल्म में 6 गाने हैं. वो आप गानों की डिटेल तब जानेंगे जब सुनेंगे, जब म्यूज़िक रिलीज़ होगा. लेकिन एज फार एज द बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है मिथुन को, जिसने इस फिल्म के गाने भी किए हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है. हमने कुछ 7 से 7.5 महीने लिए थे इसका बैकग्राउंड करने. नॉर्मली एक एवरेज फिल्म को 2-2.5 महीने लगते हैं. एंड
it was a very intense process. It was a fantastic process because we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. तो उसके लिए आई थिंक एक राइट पार्टनर होना बहुत ज़रूरी था जो मिथुन था. दूसरी बात ये है कि बिकॉज फिल्म के विजुअल्स लार्जर देन लाइफ हैं, बैकग्राउंड स्कोर लार्जर देन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको सपोर्ट करे. एंड मेरा ये मानना है कि हम जो पुराने ज़माने में या हम आगे जाके आज हम जब गणपति के विसर्जन पे जाते हैं, जब ढोल सुनते हैं, हम जब लाइव इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था. एंड आई थिंक शमशेरा फॉर मी वॉज द राइट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट बैक एंड री इन्वेंट इट फॉर अ फिल्म दैट विल रिलीज in today's times. So that experience was brilliant. Thank you. करण मेरा सवाल आपसे है. पराग, हाँ पराग. हाँ जी. जिस तरह से आपका ट्रेलर देखा, आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है. Thank you. Thank you. और जिस तरह से ये पूरी फिल्म देख रहे हैं, और पिछले दिनों हम साउथ की फिल्मों का भरमार देख रहे थे और जो कंटेंट देख रहे थे, क्या बॉलीवुड अब कंटेंट को लेके उस तरह से सोच रहा है? पहला सवाल. दूसरा सवाल मेरा सोना से है कि सोना, क्या आपके हिस्से में कुछ एक्शन आया है जिस तरह से दिख रहा है, या तो पहला जवाब जी. मैं दे दूं? अच्छा. तो सर मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट साउथ या हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड और एनीथिंग. मुझे लगता है कि अक्रॉस द कंट्री जितनी फिल्में रिसेंटली चली हैं, वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से चली हैं. वो है फिल्म मेकर का कन्विक्शन. वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी स्टेट में हो. द कन्विक्शन ऑफ द फिल्म मेकर हैज़ met with humongous success, and मुझे लगता है कि as a country we should only be celebrating that, nothing else. And I hope कि हम सब मिलके वो conviction अपनी कहानियों में create कर पाएं. जब हम सोच रहे हो किसी कहानी के submission के लिए, उसी conviction से सोच पाएं, जिस conviction से इन successful filmmakers के filmmakers सोच पाएं. वो बहुत ज़रूरी है, because I think it's the success of the conviction. It's not about anything else. It's not about whether a South Indian film worked or a Hindi film worked. It's got nothing to do with that. वानी. जी, तो टूम रेडर जितना एक्शन नहीं किया मैंने, पर होपफुली नेक्स्ट अगली फिल्म में, बट थोड़ा बहुत मौका मिला है एंड आई हैव रियली एंजॉयड इट. संजय सर थे एंड आर के वाज आल्सो देयर इन दैट एक्शन स्टंट दैट आई डिड. एंड I remember एक scene था where Sanju sir had to slap Vaani, and Vaani was telling Sanju sir, आप सच्ची में मारो. लगा दो एक और जोर की संजू लगा सर दो बोल रहे मैं सच्ची में मारूं. No, but Sanju sir was like, नहीं मैं नहीं मार सकती हूँ, so little like I can't hit you. So I think he was just being protective and She very. wanted a real reaction. So I think I'm a method actor that way. क्या बात है. एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे. अच्छा सेकंड लास्ट. हाँ हाँ बोलिए. Thank you. दोनों मान लीजिए. ये एक्चुअली मेरे हाथ में था नहीं. ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, यू नो, बिग बजट VFX हैवी फिल्में हैं, सो दे हैव टेकन इट्स टाइम. कोविड भी आ गया था, तो आई डोंट नो इफ इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग और अ फॉर्चुनेट थिंग कि मेरी दोनों फिल्म आई थिंक 45 डे के स्पैन में आ रही है. बट आई थिंक फिल्में को लेके अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है. मेरी शादी हुई है इस साल. वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में. मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई. लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव, हक्का नूडल होना चाहिए. बट बॉस, ज़िंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है. एंड मैंने लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है. सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर इन माय लाइफ. एक लास्ट क्वेश्चन दोस्त. एक्चुअली इनको जाना है वडोदरा, इंदौर भी जाना है आज. पूछने दो. जी जी जी. सिमिलैरिटी तो कुछ नहीं है. इट्स दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. KGF ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कम बोलने वाला आदमी है. शुद्ध सिंह इज़ मोर फन. ही इज़ अमेजिंग. ऑल आई कैन से इज के ही इज़ जस्ट फन, ही इज़ डेंजरस, ही इज़ कनाइविंग. लेकिन
सेट प्रॉब्लम पे हुआ था, प्रॉब्लम सेट पे हुआ था जब रणबीर को मुझे चाबुक मारना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगा। फिर क्लाइमैक्स में मैंने इसको मारा, वो भी अच्छा नहीं लगा। और वानी को थप्पड़ अगर मार देता तो शायद यहाँ उससे बैठी अच्छा नहीं नहीं होती। But I can't compare both the films. I mean, it's totally different. क्या बात है। Alia has seen the teaser. She's in London right now, so she's sleeping. So I guess once she wakes up, she'll see the trailer. And I already answered the question, about Sanju sir. Is that my journey from idolizing him to playing him to actually for us being nemesis has really been amazing. एक लास्ट क्वेश्चन। Ranbir, yeah. जी। Ranbir. एक लास्ट क्वेश्चन कोई भी ले लो यार। Yeah. हाँ हाँ पूछिए पूछिए। Ranbir, सर पूछिए। this is kind of a different character you have played currently after a very long. And was some kind of exercise or some kind of a role play you require to go to this character, to fit in this character? Hanji, of Right. course, every character comes with its own challenges, its own homework. You have to research it, you have to interact with the director, you have to work with him. तो बहुत हमने प्रेप किया इस फिल्म को लेकर, बहुत एक्शन प्रेप था. We got fantastic crew from all over the world. Even our local crews, we put in like 30 days of rehearsal work before each sequence. जैसे आपने एक झलक देखी है, एक ट्रेन का सीक्वेंस है, वो एक्चुअली करण मल्होत्रा ने एक वन शॉट जैसा डिज़ाइन किया था, तो वो बहुत मज़ेदार था. इवन टू लाइक रिहर्स इट एंड परफॉर्म इट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन टू दैट. चलिए आइए। Okay, Karan. फोटो लेंगे। फोटो। Karan. एक लास्ट। ओके। Karan. फोटो। Karan, how many days it took to shoot this visual spectacle? So we shot Shamshera for over 140